हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे चैनल पे फाइनेंस मार्केट में। दोस्तों, हम लोग आज ऐसी कुछ पॉइंट्स देखेंगे, 10 पॉइंट्स लगभग देखेंगे जो आने वाला जो वीक है, ट्रेडिंग वीक, मंडे टू सैटरडे चलेगा। इसमें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हलचल मचा सकती हैं मार्केट के अंदर। आइए एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, और आपको जैसा भी लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपना एक रिएक्शन जो ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। तो आइए आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि मैं आपको सबसे पहले लेके चलूँगा मनी कंट्रोल पे, और वहाँ से मैंने एक आर्टिकल पिकअप करी है, और आइए इस आर्टिकल को मैं आपको बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। थोड़ी सी वीडियो जो है लंबी हो सकती है, तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा क्योंकि 10 पॉइंट्स हैं और थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा दोस्तों। और आपको या आपके किसी दोस्त को डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक करके सिंपल तरीके से आप अपना काम करा सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक। मार्केट वीक अहेड, 10 key things that will keep traders busy this week. Let's discuss. The market saw profit booking and consolidation in the week ended January 24 after hitting a record high, indicating caution ahead of the much-awaited key event of the year, Budget 2020, which is scheduled to be presented on Feb 1st. The cut in fiscal year 20 economic growth forecast to 4.8% by the International Money Fund (IMF) and mildly subdued Q3 results from banks and select heavyweights damped the mood of investors. The Nifty 50 and BSE Sensex fell 0.8% each during the week after more than 3% rally in the previous 2 consecutive weeks. But the outperformance of the broader markets continued due to buying in quality mid and small caps due to attractive valuations ahead of the budget. The BSE Mid Cap Index climbed up 0.7% and the small cap index rose 0.93% during the week. The coming eventful and longer than a usual week is expected to see more volatility amid earnings and ahead of the budget, which could be the only reason for the rally if it takes during the week, experts feel. तो दोस्तों, यहाँ पे जो भी है, अभी जो लास्ट वीक ट्रेडिंग वीक निकला है, इसमें काफ़ी तेज़ी रही है और प्रॉफिट बुक हुई है। लेकिन जो आने वाला वीक है मंडे टू सैटरडे का, ये सैटरडे भी हो सकता है ओपन रहे मोस्ट प्रोबेबली, और इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मार्केट में एक साथ हैपन होने वाली हैं, एंड ऑल दिस पॉइंट्स सारी चीज़ों का जो रिज़ल्ट है एक ही बार अगर आता है तो ऑफकोर्स मार्केट में एक तरीके का सेंसेशन क्रिएट होता है, और वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। सो बजट को लेके काफ़ी एक्सपेक्टेशन है लोगों की, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, लेकिन आगे इफ़ द बजट डज नॉट मीट द हाई एक्सपेक्टेशन, द मार्केट कैन सी ए शार्प सेल ऑफ आफ्टर इट एंड ऑड्स ऑफ दिस लुक हाई। मतलब मार्केट के अंदर जो लोगों को एक्सपेक्टेशन है बजट को लेके न्यू ईयर 2020 का, अगर उन एक्सपेक्टेशन में मार्केट का जो बजट है नहीं उतरता है तो हो सकता है इसमें सेल ज़्यादा हो और मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिले, जिसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रही है। So here are 10 key things that will keep traders busy this week. So let's discuss first. Union Budget 2020. The key event of the week would be the budget, and this time it would be much important than any other past budgets considering the protracted economic slowdown. Even after several measures announced by the government, including a sharp cut in the corporate tax rate, the street expects more such measures that could be reviving द इकॉनमी सूनर दैन लेटर। दोस्तों, यहाँ पे पहले भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट जो है कॉर्पोरेट रेट टैक्स और बहुत सारी चीज़ें कर चुकी है जिससे इंडियन इकॉनमी को रिवाइवल मिले, लेकिन ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं है। तो एक्चुअली में अब उससे ज़्यादा कुछ होने की उम्मीद है लोगों को बनी हुई है, और देयर आर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस increased significantly as the market rally suggests, especially after Prime Minister Narendra Modi had a lot of long meetings with corporates, bureaucrats, etc. earlier this month with the intention of fast resolution to economic slowdown and to achieve $5 trillion targets. This indicates that the state could be prepared for some amount of fiscal slippage in next financial year. The street has wide expectations from the Finance Minister Nirmala Sitharaman,
including restructuring the insecure transaction tax यानी STT, long term capital gain tax, distribution tax, cut in personal income tax, positive measures to industries, scheme for rural market to boost consumption, large scale disinvestment of PSUs, steps to implement the next phase of direct benefit transfer यानी DBT, etc. Sector specific goodies could also be one of the card segments like agriculture, housing finance, auto, infra, realty, etc. In terms of fiscal deficit, the market is even ready to handle fiscal deficit in range of 3.6 to 3.8% in fiscal year 20 against 3.3% announced in last budget. दूसरी खबर हो सकती है दोस्तों ऑटो सेल का डेटा रिलीज होने वाला दोस्तों आने वाले वीक में यानी मंडे टू सैटरडे के बीच में. तो दिस इज ऑल्सो सेकंड बिगेस्ट खबर न्यूज़. The auto sales data for the first month of 2020 will also be released on Feb 1st, along with ongoing earnings season, so it will remain a hectic day for the market. Hence, along with budget, monthly sales also would be a reason for a lot of activity in auto stock like Maruti Suzuki, Mahindra & Mahindra, Tata Motors, Ashok Leyland, Hero MotoCorp, Eicher Motors, Bajaj Auto Escorts, TVS Motor, etc. Analysts largely expect some growth in passenger vehicles, but commercial vehicles remain to be tensionized. कमर्शियल व्हीकल्स हैं उसमें टेंशन बनी रहने की उम्मीद है, और जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं उनमें सेल काफ़ी ज़्यादा हुई है, बाइंग ज़्यादा हुई है, तो उसमें थोड़ी सी ग्रोथ की उम्मीद करी जा रही है. तो थर्ड न्यूज़ हो सकती है दोस्तों अर्निंग्स को लेकर. अर्निंग्स वुड रिमेन ए फोकस फॉर 3 more weeks so far. This has been a mixed earnings season considering the economic slowdown and no major positive surprise. Around 400 companies will declare their quarterly earnings in the coming week. दोस्तों आने वाले वीक में 400 लगभग कंपनीज जो हैं अपने अर्निंग्स का डेटा रिलीज़ करने वाली हैं यानी मंडे टू सैटरडे वाले वीक में कमिंग वीक. सो जैसे कि SBI है, ITC है, HUL है, मारुति सुजुकी है, HDFC है, डॉक्टर रेड्डीज लैब, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स, भारतीय इंफ्राटेक, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, IOC, डाबर, इंटरग्लोब, एविएशन, यूनाइटेड स्पिरिट्स, टोरेंट फार्मा, स्पेंडरा, स्पुटरी एंड क्यूमिंस, M&M फाइनेंशियल, टाटा पावर स्कॉट्स, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, Colgate, Palmolive, Macro, LIC, Housing, और वेदांता, बैंक ऑफ इंडिया एंड अमारा राज बैटरीज एट्सेट्रा. लगभग 400 टोटल कंपनीज हैं जो अपने अर्निंग्स की डेटा को रिलीज़ करने वाली है इनकमिंग ट्रेडिंग वीक. सो दैट्स वाई दिस इज़ द बिगेस्ट न्यूज़ विच माइट बी सरप्राइजिंग इन कमिंग वीक. सो नेक्स्ट जो फोर्थ है दोस्तों दैट इज़ FOMC and BOE policy meets. Globally, the key event to watch out for world would be the Fed interest rate decision in the country and its commentary on Wednesday midnight. Economists largely expect the FOMC to keep interest rates unchanged in range of 1.5 to 1.75% in January policy meeting, considering the outlook on growth and inflation. Experts feel the Federal Reserve will closely watch the impact of recent US-China trade deal, US-Mexico and Canada deal, and inflation before taking any interest rate decision ahead. Bank of England will also announce its monetary policy decision during the week on January 30th. As well, economists expect Mark Carney, the governor of BOE, who is retiring in March, and to be replaced by Andrew Bailey. To hold rates in the MPC, the meeting given the better than expect. ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर की खबर है, इंटरनेशनल लेवल की खबर है. नेक्स्ट दोस्तों हो सकती है खबर जो इम्पोर्टेंट है जो कि ब्रेक्सिट डेडलाइन. जी हाँ दोस्तों, फाइनली यूनाइटेड किंगडम इज सेट टू एग्जिट द यूरोपियन यूनियन नेक्स्ट वीक्स January 31st, 2020 deadline as British Prime Minister Boris Johnson on January 24th signed a withdrawal agreement paving the way for United Kingdom's exit from the EU. Today and Friday, I have signed the withdrawal agreement for the UK to leave the EU on January 31st, honoring the democratic mandate of British people, Johnson said in tweet. The signature
heralds a new chapter in our nation's history. ये एडेड। दोस्तों नेक्स्ट हो सकता है जो इम्पोर्टेंट बर्निंग न्यूज़ हो सकती है टेक्निकल व्यू। Nifty 50 has taken support around the 50 DEMA on the daily chart and closed higher for the second consecutive session, forming a bullish candle on daily charts as closing was higher than opening price. हम सबको पता है इस हफ्ते ने इसने अपना एक रिकॉर्ड हाई टच किया 12,430 लेवल का। सो ये एक इम्पोर्टेंट खबर हो सकती है, एक बर्निंग न्यूज़ हो सकती है। Market is climbing higher, taking support at the rising trend line since October of last year. However, the velocity is waning with every rise, which makes the level of 12,050 in Nifty 50 very crucial to sustain the upward trend. Any move below 12,050 level should be seen as the beginning of bigger correction. However, till that time, traders can keep long and buy and on declines with weekly loss as stop. ओके, नेक्स्ट बर्निंग न्यूज़ हो सकती है दोस्तों विच इज़ F&O एक्सपायरी। जी हाँ, फ्यूचर एंड ऑप्शन की एक्सपायरी डेट है यहाँ पे इस हफ्ते में। ऑन द ऑप्शन फ्रंट, मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट वाज सेट एट 12,000 लेवल, followed by 12,200 strike, while maximum call up open interest was at 12,500, followed by 12,300 strike. A good amount of put writing was seen in 12,200 and 12,250 strikes, while marginal call writing was seen at 12,450, followed by 12,350 strike. This option data indicates that Nifty could trade in a range of 12,100 to 12,500 in the coming days. So ये एक important point हो सकता है। Okay. Next point which could be a burning news for the coming week, and that is corporation action. Here are key corporate actions taking place in the coming week. ये दोस्तों जैसे इंडिया ग्रिड ट्रस्ट है, इसका पर्पज़ है डिस्ट्रीब्यूशन का, और 27 जनवरी 2020 की इसकी डेट रखी गई है। एंड इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। इस तरीके से मिसू चैम्प्लास लिमिटेड है एंड सो ऑन। ITI Limited's further public offer will remain open for subscription till January 28, 2020, and the rupees 1,400 crore issue so far subscribed to 6% global queues. Apart from FOMC meet and Brexit deal, here are other key data points to watch out for the coming week. दोस्तों यहाँ पे जो इसमें रखा गया है, and it is United States Monday to new home sales for December, Tuesday and वगैरह वगैरह। तो ये दोस्तों ये जो कुछ पॉइंट मैंने आपको एक्सप्लेन किए, इन पॉइंट से आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है, बिकॉज these are 10 important things which are going to happen in coming trading week. So you have to be careful about all these things points. और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पे। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ के डेटा रिलीज, 400 लगभग कंपनीज़ के डेटा रिलीज़ होने वाले हैं, अर्निंग्स वाले डेटा। सो आपको बहुत सावधानी रखने की ज़रूरत है यहाँ पे दोस्तों। और बस यहीं तक, और जैसा भी आगे होता है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। एंड बस आज के लिए इतना ही। And if you are new, then please hit the subscribe button and press the bell icon near to that. And if आपको या आपके किसी दोस्त को डेमेट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, क्लिक ऑन दैट एंड दैट्स इट। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर।